खात्मा आसान हो गया था। तो इस तरीके से कुरान ने नमाज को और ज़कात को इज्तिमाई अमल जिक्र किया है। तो अब जाहिर है कि हमारे यहाँ पर हम सब अलग अलग इस वक्त तो मिजाज और माहौल भी यही है कि हर एक इंडिविजुअल अपनी अपनी ज़कात को अदा करता है। तो अब यहाँ पर ये कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की ज़कात एक साथ जमा हो जाए, बज़ाहिर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका एक आसान तरीका ये हो सकता है कि जिस शक्ल में भी इज्तिमाइयत आ सकती है, जिस शक्ल में भी इज्तिमाइयत आ सकती है, अगर एक कंट्री की ज़कात एक जगह पर जमा हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, या एक स्टेट की हो सकती है, या एक सिटी और एक इलाके की हो सकती है, या एक मोहल्ले या एक मस्जिद की भी अगर हो सकती है कि एक मस्जिद वाले ये तय करें कि हमारी जितनी भी ज़कात होगी वो एक साथ जमा हो जाएगी, और उस मस्जिद के अतराफ में रहने वाले जितने भी ज़रूरतमंद है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको वेरीफाई किया जाएगा, और ये ज़कात उन्हीं के दरमियान तकसीम हो जाएगी। अगर ये मस्जिद मस्जिद के सतह पर भी इस चीज़ को अगर काबू में लाया गया तो ये ज़कात का इज्तिमाई अमल बहुत बड़ी खैर वजूद में ला सकता है। बहरहाल तो ज़कात के इस सिलसिले में यही बताना है कि ज़कात एक इज्तिमाई अमल है, तो उसको इज्तिमाई तौर पर अदा करने की कोशिश करना चाहिए। आखिरी दर्जे में ये है कि अगर एक मस्जिद वाले भी जमा नहीं हो सकते हैं तो कम से कम ये कि चंद मालदार, चंद ज़कात निकालने वाले ये आपस में अपनी ज़कात को एक साथ जमा करें, और फिर उसके बाद उसका जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन का और आइडेंटिफिकेशन का, उसके ज़रिए से अपनी ज़कात को अदा करें। या फिर ये कि वो लोग ये तय करें कि इस साल हम 2 लोगों को या 5 लोगों को या 10 ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे जो आज ज़कात के मुस्तहिक है, लेकिन उनको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे ताकि आइंदा वो ज़कात लेने वाले ना बने बल्कि देने वाले बन जाए। इस तरह से अगर हम उम्मत मुस्लिमा अगर इस पर आ जाती है तो एक बहुत बड़ी खैर वजूद में आ सकती है। दूसरी बात इसमें इस स्लाइड में ये भी बताई गई है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, कि नमाज ये अल्लाह का हक है और ज़कात अल्लाह का भी हक है और बंदों का भी हक है, तो इसी वजह से इसके ऊपर वईद भी बड़ी सख्त है। इसी तरह नमाज ये आदमी के जिस्म को अल्लाह से करीब करती है, जिस्मानी इबादत है, और ज़कात ये माली इबादत है, ये फाइनेंशियल वर्शिप का एक तरीका है। तो ये ज़कात और सलात में सिमिलैरिटीज कुरान ने बयान की है, उसका जिक्र था। अभी तक जितनी बातें हमने अभी तक जितनी बातों का जिक्र आया है, तो उस सिलसिले में यह है कि ज़कात एक तो इस्लाम के बुनियादी फ़राइज़ में से, बुनियादी अरकान में से है। और पहली बात यह आई कि अल्लाह हमारे जान और माल का ज़िम्मेदार है, और हमारा जान और माल हमारे इख्तियार में नहीं है, हमें बस खर्च करने का उसका सही तरीका जानने की ज़रूरत है। इसी तरह जो है अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को मालदार बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, ये अल्लाह का अपना निज़ाम है। तो इस वजह से ज़कात का बेसिक कंसेप्ट यही बनता है कि अल्लाह ने जो माल दिया है उस माल में से हम गुरबा का, ज़रूरतमंदों का हिस्सा निकालें और उसको उसकी अदायगी की कोशिश और फिक्र करें। और एक बात दरमियान में ये भी समझ लेना चाहिए कि इसका जिक्र आगे भी आएगा कि जैसे चूंकि आमतौर से हम लोग टैक्स अदा करते हैं, इनकम टैक्स अदा करते हैं, तो टैक्स जो होता है ये इनकम पर होता है, और ज़कात जो होती है ये सेविंग्स पर होती है। इसका जिक्र आगे आएगा, इसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, ज़कात का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ज़कात के ज़रिए से, एक तो ज़कात के माना ही होते हैं प्यूरिफाई करना, किसी चीज़ को पाक साफ कर देना, ये ज़कात के माना होते हैं। तो ज़कात असल में इंसान के दिल को प्यूरिफाई कर देती है, उसको पाक साफ कर देती है, उसका तज़किया कर देती है। इसलिए कि इंसान के दिल में जब माल की मोहब्बत आ जाती है, दुनिया की मोहब्बत आ जाती है, तो ये भी दिल की बीमारियों में से एक बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे हमारी बॉडी बीमार होती है, उसको अलग अलग डिजीजेस का साबका होता है और बीमारियां लगती हैं, ऐसे ही हमारा दिल भी बीमार होता है। तो दिल की बीमारियों में से एक बीमारी है उसका उसका उसके अंदर माल की मोहब्बत का आ जाना और दुनिया की मोहब्बत का आ जाना। तो ज़कात के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला दिल को पाक साफ करते हैं, दिल के अंदर जो लालच और तमा होती है इसको अल्लाह ताला दूर फरमाते हैं। इसी तरह ज़कात जो है ये ज़कात जो है आदमी के, यानी जो मुस्लिम मुआशरा है, ये सोसाइटी है, इसके अंदर जो माल है या पैसा है इसको रोकने से मना करती है कि ये सर्कुलेट होता रहे सबके दरमियान, तो इससे सबको फायदा होता है। ये ज़कात का कंसेप्ट बन जाता है। इसी तरह
قرآن نے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی کیٹیگریز بیان کی ہے، آٹھ لوگوں کے نام بیان کیے ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، تاکہ یہ جو ایک دنیا میں اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو مالدار ہے وہ اور زیادہ مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ اور زیادہ غریب ہوتا ہے، تو یہ سودی نظام کی وجہ سے جو انٹرسٹ بیس سسٹم ہمارے یہاں پر چل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صاف اعلان ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک تعالیٰ سود اور ربا کو ختم کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ، اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں، تو لہٰذا قرآن نے خود اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے پیچھے حکمتیں ہیں کہ اس میں دل کی بھی صفائی ہے، اسی طرح مال کی بھی صفائی ہے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے، تو مال کی بھی صفائی ہے، دل کی بھی صفائی ہے، اور اسی طرح معاشرے میں بھی خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ اب ہم آتے ہیں جو بیسک چیزیں ہیں زکوٰۃ سے متعلق، تو اب یہ اتنی بات پتہ چلی کہ جو مالدار ہے اس کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے، مال پر اس کا حق نہیں ہے، غریبوں کا حق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مالدار کون ہے، کس کو ہم مالدار سمجھیں گے؟ جیسے عام طور سے دنیا میں اس وقت جو معیار ہے کہ پاورٹی لائن سے نیچے کون لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک معیار طے کیا گیا ہے، تو ایسے ہی شریعت کی نگاہ میں مالدار کون ہے، ویلدی کون کہلائے گا، اس کے لیے بھی ایک معیار ہے، اور وہ معیار ہے گولڈ اور سلور کا نصاب، سونے اور چاندی کا نصاب ہے۔ عام طور سے مشہور ہے کہ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ اور سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ، کہ یہ اس زمانے میں سونا اور چاندی یہ اصل ویلتھ ہے، باقی یہ کرنسی نوٹس اور باقی کی بانڈز وغیرہ یہ تو ان کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تو اس وجہ سے شریعت نے مالداری کا جو معیار بنایا ہے وہ سونے اور چاندی کو مالداری کا معیار بنایا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی سونا اور چاندی ان کا نصاب کیا ہونا چاہیے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ، لیکن اگر ہم اس کو گرامز میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ 87 گرامز ہو جاتا ہے۔ 87 گرامز جس کے پاس بھی سونا ہے یا اس کے ایکولنٹ ویلتھ ہے اس کے پاس، جو آج کے انڈیا کے اعتبار سے اگر ہم اس کا ریٹ نکالتے ہیں تو تقریباً 4,90,000 یہ اس کا جو ہے ایکولنٹ ہو جاتا ہے 87 گرامز کے، تو اتنا اگر کسی کے پاس پیسہ ہے یا اس کے برابر سرمایہ ہے یا مال ہے یا ویلتھ ہے، تو وہ جو ہے سونے کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اور سلور کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ کہا جاتا ہے، جس کو گرامز میں کنورٹ کریں تو 612 گرامز ہوتے ہیں، جو ایکولنٹ ہوتا ہے 40,000 روپئے انڈین روپیز کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ اب ہم ٹھیک ہے یہ سونا اور چاندی کا نصاب ہم کو سمجھ میں آ گیا، تو اب یہ کہ ہم کب اپنی زکوٰۃ نکالیں، تو اس نصاب کے برابر جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہم مالدار ہو جاتے ہیں شریعت کی نگاہ میں، اب اس کے بعد ہم کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں یہاں پر علماء کے اسکالرز کے دو اوپینینز ہیں، ایک یہ کہ کچھ علماء ہیں کہ جو گولڈ کے نصاب کو معیار قرار دیتے ہیں، اور کچھ علماء ہیں جو سلور کے نصاب کو معیار قرار دیتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس وقت گولڈ کے نصاب کو معیار قرار دینا چاہیے، اس لیے کہ کسی کے پاس 4,90,000 یعنی 5 لاکھ کے آس پاس اگر اس کے پاس ویلتھ موجود ہے تو آج کے سوسائٹی میں بھی وہ کسی نہ کسی درجے میں مالدار سمجھا جاتا ہے۔ 40,000 کا تو بہت زیادہ اعتبار نہیں ہوتا ہے، 40,000 کسی کے پاس ہو تو آج کی سوسائٹی میں اس کو مالدار نہیں سمجھا جاتا، لیکن بہرحال یہ دونوں اوپینینز ہیں علماء کے، ہماری رائے گولڈ کے نصاب کو معیار قرار دینے کی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے جو زکوٰۃ نکالنے والے ہیں ان کے ساتھ سارے مسائل پوری طرح سے فٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ کہ زکوٰۃ کا یہ تو نصاب ہو گیا، اب اس کے بعد زکوٰۃ کے بہت سارے شرائط ہوتے ہیں، تو ان شرائط میں نہ جاتے ہوئے بیسک چند چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومتیں تو ٹیکس وصول کرتی ہیں انکم پر، لیکن زکوٰۃ انکم پر نہیں ہے، سیونگز پر ہے، کہ آدمی کی مثال کے طور پر جو ہے اس کے پاس 10 لاکھ روپے کی انکم ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی ضروریات میں اور سب چیزوں میں اس نے اس کو خرچ کر دیا، اس کا ایکسپنس ہو گیا، اب اس کے بعد صرف 5 لاکھ بچتے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، بلکہ 5 لاکھ پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، چونکہ آپ سونے کے نصاب کے برابر آپ کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے، اور یہ رکھا ہوا ہونے کا مطلب یہ کہ 1 سال تک رکھا ہوا ہو، تو
तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो निसाब है उस निसाब के बराबर माल या पैसा हमारे पास रखा हुआ हो, और 1 साल तक, 1 साल में लूनार ईयर का एतबार होता है, कमरी साल का एतबार होता है। लेकिन अगर कोई जो है शमसी साल के एतबार से, सोलार ईयर के एतबार से भी अगर ज़कात निकालना चाहे तो उसकी भी इजाज़त है। मिसाल के तौर पर मार्च एंडिंग पर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है हमारे इंडिया के एतबार से, तो उस वक्त भी वो अपनी ज़कात का हिसाब अपनी बैलेंस शीट वगैरह के एतबार से कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन में फ़र्क हो जाता है, उस फ़र्क को समझ लेना चाहिए। बस फ़र्क इतना है कि अगर लूनार ईयर के एतबार से अगर ज़कात निकाल रहा है तो उसको 2.50% यानी 2.5% की ज़कात निकालना है, और अगर सोलार ईयर के एतबार से अगर वो ज़कात निकालना चाहता है तो 2.577% के हिसाब से उसको ज़कात निकालना है, तो इंशाल्लाह उसकी ज़कात सही तौर से अदा हो जाएगी। तो पहली शर्त तो ये है कि आदमी के पास इतना माल हो कि वो निसाब के बराबर हो, दूसरा है कि वो ज़रूरियात से ज़्यादा हो, तीसरा है कि वो 1 साल तक उसके पास रहा हो, और चौथी बात ये है कि वो कर्ज से खाली हो, यानी उसके ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा ना हो। लेकिन कर्जे के सिलसिले में भी उलमा की दो राय हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि कर्जा जो डेप्थ है उसको माइनस किया जाएगा टोटल वेल्थ में से, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो कर्जा है, जो डेप्थ है, उसको माइनस नहीं किया जाएगा टोटल वेल्थ में से। तो ये दो ओपिनियन है उलमा की इस सिलसिले में। ये तो ज़कात से मुतालिक बेसिक जो कंसेप्ट्स थे उसका बयान हो गया। अब उसके बाद जो है कुछ मिसकंसेप्शंस है, उसके बारे में हम थोड़ा सा तज़किरा करते हैं, और फिर इंशाल्लाह जो है हम डेमोन्स्ट्रेशन पर आएंगे कि किस तरह से ज़कात को निकालना चाहिए। आमतौर से सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये होता है कि मैं ज़कात, और ये मिसकंसेप्शन शैतान और नफ्स की तरफ से होता है कि मैं अगर ज़कात निकालूंगा तो बज़ाहिर मेरा पैसा, मेरी वेल्थ कम हो जाएगी। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में खुद फरमाते हैं, वमा आतईतुम मिन ज़कातिन तुरीदून बिही वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़इफून, कि जो माल तुम सूद के तौर पर देते हो, सूद में इंटरेस्ट में बज़ाहिर माल बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि जो सूद के तौर पर तुम देते हो ये माल तो कम हो जाएगा, और जो ज़कात के तौर पर जो तुम देते हो फउलाइका हुमुल मुज़इफून, तो इसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। तो दरमियान में अर्ज कर दूं कि अगर जो है जो भी किसी के जहन में सवाल हो, इंशाल्लाह आखिर में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, उसमें ज़रूर ये सवाल कर सकते हैं। तो बहरहाल तो ये शैतान की तरफ से वसवसा होता है, ये शैतान की तरफ से वसवसा होता है कि जो है अगर मैं ज़कात निकालूंगा तो मेरी वेल्थ कम हो जाएगी। हालांकि अल्लाह फरमाते हैं कि हम ज़कात को और सदक़ात के माल को बढ़ाते हैं, और इसी तरह हदीस पाक में आता है कि जिस शख्स ने भी ज़कात या सदक़ा के तौर पर माल दिया उसका माल कभी भी कम नहीं होता है। मुख्तलिफ हदीसें इस सिलसिले में बुखारी वगैरह की मज़कूर है। उसके बाद दूसरा एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि आमतौर से आदमी जब मालदार हो जाता है तो एक मरतबा, दो मरतबा ज़कात निकालने के बाद कभी कभी जहन में ये बात आती है कि मैंने पिछले साल ज़कात निकाल ली थी, तो क्या अब हर साल ज़कात निकालने की ज़रूरत है? तो उसका जवाब ये है कि जी हाँ, हर साल आपको ज़कात निकालना है, और हर साल आपको अपने वेल्थ का कैलकुलेशन करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अपना वेल्थ कितनी है, इसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए कि आपके पास आज की तारीख में कितना सोना है, कितना चांदी है, या उसके इक्विवेलेंट कितना पैसा है, या बॉन्ड्स है, या शेयर्स है, या जो भी इस तरह की चीजें हैं जिसकी तफसीलात इससे पहले वाले वेबिनार में आ चुकी हैं, तो उसमें और इंशाल्लाह आगे भी आएगी। तो लिहाजा हर साल हमें ज़कात निकालना है, जिस तरह हम हर साल रोजा रखते हैं, तो इसी तरह हर साल हिसाब करके ज़कात निकालना ये जरूरी है। तीसरा एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि भाई 7.5 तोला अगर सोना होगा तब जाकर हम मालदार हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ज़कात निकालना है। तो जो निसाब है 7.5 तोला कहिए, ये 87 ग्राम्स कहिए, या उसके इक्विवेलेंट 4,90,000 का जो इंडियन रुपीज में बनता है, जो भी कहिए, तो इससे आमतौर एक बात जहन में ये आती है कि उससे ऊपर जो हमारे पास माल या पैसा है उसकी सिर्फ ज़कात देनी है, ये 7.5 तोले की ज़कात नहीं देनी है। हालांकि ये गलत बात है कि ये अगर 7.5 तोले तक या 7.5 तोले से नीचे अगर आपके पास सोना या उसका पैसा है तो अब आपको ज़कात देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 1 रुपया, 1 पेनी भी अगर आपकी 7.5 तोले से ज्यादा हो जाती है तो आपको पूरे सोने चांदी पर आपको ज़कात देना है। तो इसको समझने की जरूरत है।
चौथा मिसकंसेप्शन ये होता है कि आम तौर से हमारे यहाँ पर जो होम मेकर्स होते हैं, जो जो औरतें होम मेकर्स हैं, अपने घर पर रहती हैं और घर के निज़ाम को संभालती हैं, तो उनके पास ज़ेवरात तो होते हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ज़ेवरात पर ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। तो अब ये ज़कात कौन निकाले? शौहर निकालेगा या बीवी निकालेगी? तो देखिए, इस्लाम में मियाँ बीवी दोनों लिबास की तरह से हैं, दोनों बिल्कुल एक साथ रहेंगे, ये दोनों लाइफ पार्टनर्स हैं, लेकिन इनका वेल्थ जो होगा, इनका पैसा या इनका माल जो है, ये दोनों अलग अलग होगा। कि जेवरात अगर बीवी के पास है, चाहे वो अपने मैके से लेकर आई है या उसको ससुराल से मिले हैं या उसने खुद खरीदी है, ये तमाम चीजें ये वाइफ की, ये बीवी की मिल्कियत कहलाएगी, ये उसकी जिम्मेदार है। तो लिहाजा जो है उसकी ज़कात भी बीवी पर फर्ज है, शौहर पर फर्ज नहीं है कि वो बीवी की तरफ से ज़कात अदा करे। हाँ, अगर हुस्न सुलूक के तौर पर, सिला रहमी के तौर पर अगर शौहर ये चाहता है कि अपनी बीवी की भी ज़कात अदा करे, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ जो होगी वो बीवी पर ही होगी। अब सवाल ये है कि अगर बीवी के पास पैसे ही नहीं है, ज़ेवरात है लेकिन पैसे नहीं हैं, तो फिर वो किस तरीके से ज़कात अदा करेगी? तो उसका जवाब ये है कि या तो वो जो ज़ेवरात है उनको बेच दे और उससे जो पैसे हासिल हो जाएँगे उससे अदा कर ले, उसके ज़रिए से ज़कात अदा करे, या ये भी हो सकता है कि किसी के पास से या हस्बैंड के पास से ही कर्ज ले ले, ज़कात अदा करे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता साल भर में जैसे-जैसे थोड़ी बहुत उसके पास अगर कुछ पैसे जमा हो जाते हैं तो वो उसको अदा कर ले। तो जो भी शक्ल हो सकती है इसको इख्तियार किया जा सकता है। अलबत्ता बीवी की ज़कात बीवी पर फ़र्ज़ है, शौहर की ज़कात हस्बैंड पर फ़र्ज़ है। दोनों की ज़कात का कैलकुलेशन अलग-अलग होगा, एक साथ नहीं होगा। हाँ, लेकिन सिला रहमी के तौर पर एक दूसरे की ज़कात अदा कर सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि शौहर बीवी की ज़कात अदा करे और कभी ऐसा भी हो सकता है कि बीवी शौहर की ज़कात अदा करे। ये भी पॉसिबल है, ये भी मुमकिन है। और बल्कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि बीवी मालदार है और शौहर मालदार नहीं है, यानी बीवी के पास निसाब के बकदर सोना चांदी है लेकिन शौहर के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। बल्कि हदीस पाक में तो हमें एक वाकया मिलता है अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि उनकी बीवी ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा कि मेरे पास माल है और मैं ज़कात देना चाहती हूँ, तो क्या मैं ज़कात अपने शौहर को यानी अब्दुल्लाह बिन मसऊद को दे सकती हूँ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बिल्कुल दे सकते हैं और इस पर आपको डबल अजर है, यानी एक तो सिला रहमी का और एक ज़कात अदा करने का। तो लिहाजा ये इस मिसकंसेप्शन को भी दूर करने की ज़रूरत है। फिर वही बात आती है कि अगर बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि आदमी के पास सोना है, चांदी है, गोल्ड, सिल्वर है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? उससे मुतालिक मैंने बताया कि या तो वो ज्वेलरी को बेच कर ज़कात अदा करे या फिर किसी से कर्ज़ा ले ले और कर्ज़ा लेकर आहिस्ता-आहिस्ता उस कर्ज़े को फिर अदा कर दे, ये भी मुमकिन है। फिर उसके बाद एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि भई मुझे ठीक है, मैं ज़कात निकालूँगा और मैं जो है उसकी ज़कात अदा करूँगा, लेकिन मैं ज़कात ऐसा क्यों ना हो कि मैं बजाय गरीबों के देने के, बाज़ मर्तबा गरीबों के देने की वजह से वो लोग और ज़्यादा माँगने के या लेने के आदी हो जाते हैं, तो क्यों ना हो कि हम ज़कात को किसी और दूसरे अच्छे कॉज़ेज़ में इस्तेमाल करें, जैसे कि हॉस्पिटल बनाने में, मस्जिद बनाने में या ऑर्फनेज बनाने में या मदरसा बनाने में या किसी भी नेक काम में हम ज़कात को इस्तेमाल करें तो कैसा है? तो उसका जवाब ये है कि देखिए, कुरान करीम ने बाकायदा, हालाँकि कुरान हमेशा कभी भी डिटेल्स को बयान नहीं करता है, कांसेप्ट्स को बयान करता है, लेकिन ज़कात के सिलसिले में कुरान ने इसकी डिटेल बयान की है कि किन-किन लोगों को ज़कात दी जाएगी। तो 8 लोगों के नाम लिए हैं कुरान ने, तो लिहाज़ा इन्हीं 8 लोगों को ज़कात दी जाएगी। और उसके पीछे उलमा ने ये बात लिखी है कि ज़कात का किसी को मालिक बनाना ज़रूरी है। तो चूँकि कंस्ट्रक्शंस में या मस्जिद, मदरसा, ऑर्फनेज वगैरह में वो हम किसी को मालिक नहीं बना सकते हैं, इसलिए कि वहाँ जो भी निज़ाम चलता है वो ट्रस्ट के तहत या वक़्फ़ के तहत चलता है, तो वहाँ पर कोई मालिक नहीं होता है। तो इस वजह से मस्जिद, मदरसा या हॉस्पिटल्स या ऑर्फनेज वगैरह बनाने में ज़कात के माल को नहीं दिया जा सकता है, बल्कि मस्जिद, मदरसा वगैरह ये हलाल और तय्यब पाकीज़ा माल से बनाई जाएगी। अलबत्ता उसमें अगर पढ़ने वाले या उसमें अगर ज़रूरतमंद अगर ऐसे लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, तो उनको यकीनन ज़कात दी जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हॉस्पिटल में कोई बीमार है और उसके लिए बड़ा ऑपरेशन है और उसके पास पैसा नहीं है, तो आप वो ज़रूरतमंदों में आता है, कुरान ने इसको ज़िक्र किया है, ज़रूरतमंद फ़ुक़रा और मसाकीन उसके ज़िम्न में आता है, उसको आप ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह मदरसे में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट है जो
جو ہے فیس وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو یقیناً آپ فیس کے ادائیگی میں اپنے زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن تعمیر میں، کنسٹرکشن میں آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے بعض لوگوں کی طرف سے بات آتی ہے کہ ہم تو ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہم اندازے سے زکوٰۃ نکال کر دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ بعض لوگ اس کو بڑے فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں، ہم تو جو ہے حساب سے زیادہ دیتے ہیں، ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے کہ ہر سال آدمی کو حساب کرنا چاہیے، حساب کرنے کے بعد پھر جو کیلکولیشن ہوتا ہے اس سے زیادہ آدمی دے دے تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن حساب ہی نہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے اندازے سے دے دینا یہ بھی غلطی ہے، اور جو ہے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ طریقہ یہی ہے کہ آپ کے پاس تاریخ متعین ہونا چاہیے کہ فلاں تاریخ کو آپ اپنا زکوٰۃ کا آڈٹ کریں گے۔ اب اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اگر کسی جاننے والے سے، کسی مفتی سے یا کسی عالم سے بھی اگر کانٹیکٹ کرتے ہیں، جیسے آپ انکم ٹیکس بھرنے میں سی اے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اکاؤنٹنٹ کو رکھتے ہیں، تو ایسے ہی آپ اپنے زکوٰۃ کو آڈٹ کرنے کے لیے کسی اسکالر سے اگر آپ رابطہ کرتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے زیادہ آپ ادا کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ بھی آتی ہے کہ بعض مرتبہ کہ آدمی زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے، دیکھیے جیسے ہم نماز کے سلسلے میں، جیسے قرآن نے، میں نے بتایا کہ نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ نماز ہم شروع کرتے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز شروع کرتے ہیں، اور نماز ختم ہوتی ہے سلام پھیرنے پر۔ تو لہٰذا نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے اور نماز کا اختتام ہے سلام کرنے پر۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ابتدا ہوتی ہے نیت کرنے سے اور کیلکولیشن کرنے سے، اور زکوٰۃ کی انتہا اور اختتام ہوتا ہے صحیح اور ضرورت مند لوگ جن کو قرآن نے بیان کیا ہے ان تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچا دینا، تب جا کر زکوٰۃ کا پروسیس پورا ہوتا ہے، زکوٰۃ کا عمل پورا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کا حساب تو کیا، اب اس کے بعد جو آپ کے پاس مانگنے والے آ گئے یا جو ہے مدارس آ گئے، مدارس والے آ گئے، آپ نے ان کو دے دیا، تو یہ ترتیب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اسی طرح اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے مسجد کے آس پاس میں، اپنے علاقے میں، اور اسی طرح اس میں مدارس بھی ہیں اور دیگر آرفنیج وغیرہ جو ہوتے ہیں، کہ ان سب چیزوں میں جو ضرورت مند ہیں ان کو تلاش کر کے، جو واقعی مستحق ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے، ان کو ویریفائی کر کے، پھر اس کے بعد اپنی زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دینا چاہیے۔ ایک مسکنسپشن یہ بھی ہے جس کا میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ انکم پر ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ انکم پر نہیں بلکہ سیونگز پر ہوتی ہے۔ تو یہ تو شریعت کی طرف سے بہت آسانی ہے، ورنہ ہم انکم ٹیکس میں انڈیا میں تو دیکھتے ہیں کہ الگ الگ سلیبز ہوتے ہیں، اور وہ سلیب جو ہے 30% تک کے بھی جاتا ہے، یعنی آدمی کی اپنی کمائی ہے لیکن اس کا 30% اس کو گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے ایز اے ٹیکس۔ تو شریعت نے تو کتنی آسانی رکھی ہے، ایک تو یہ کہ آپ کے انکم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کا انکم کتنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک سال تک جو آپ کی سیونگز ہے اس سیونگز پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، وہ بھی 2.5%، صرف 2.5% یا 40واں حصہ آپ کو دینا ہے۔ تو شریعت کے اعتبار سے بڑی آسانی ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ انکم ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں تو کیا پھر بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ انکم ٹیکس اگر آپ ادا کرتے ہیں تو یہ اسٹیٹ اس کو اپنے ویلفیئر کے لیے استعمال کرتی ہے، اپنی اپنی کنٹریز اس کو استعمال کرتی ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کا کنسیپٹ یہ ود ان دا کمیونٹی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے درمیان اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ جو فرض ہے یہ کسی نان مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں البتہ جو صدقہ نافلہ ہے یا اور صدقہ خیرات ہم جو کرتے ہیں اس میں ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، مسلم نان مسلم، اس میں کوئی ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن زکوٰۃ جو کہ فرض ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو دینا چاہیے۔ تو یہ ود ان دا کمیونٹی یہ ایک چیریٹی ہوتی ہے زکوٰۃ کی۔ تو یہاں تک جو ہے کچھ بنیادی چیزیں زکوٰۃ سے متعلق آ چکی ہیں، اب اس کے بعد جو ہے میں راشد بھائی سے کہوں گا کہ اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے زکوٰۃ کا کانسیپٹ اور کچھ جنرل مسکنسیپشنز آپ نے بتا دیا۔ اب the next part of the program is that we will look at calculation of zakat, first for an individual, then for a business. So Mufti Yahya Moin Sahab, alhamdulillah, is on our Sharia board, and he is a Mufti from South Africa. He has completed his IFTA, and he also
has a Darul Ifta where he specializes in business related and financial, fatwas. So we are fortunate to have him on our Sharia board as well as on the panel today. So I would request Mufti Yahya Sab to take it forward. I will share the Excel file which has the zakat form in it. Mufti Sab, you can. जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला. I'm audible? Yes, Mufti Sab. Chalo, alhamdulillah. So yeah, basically, alhamdulillah, the concept is in front of you, and the general misconceptions that generally are in the minds of people, we have clarified that as well. Thereafter, moving on to the third part, we're demonstrating an actual zakat calculation. So you have the form in front of you. Hopefully, it is visible to all. So just briefly, zakat formula. The zakat giving formula is basically zakatable assets, a list of zakatable assets which will be added in one's ownership, the one person who owns, and then the liabilities, or basically the deductible liabilities that are deducted in zakat, that will be deducted from it, and then whatever is the sum, the remaining sum amount, 2.5% will be calculated of that. So as we can see that the name here is zakatable assets. So very important, and there are two aspects of this. One is an individual zakat form, wherein a person who's an individual, a normal person, he has a personal wealth, and he will have to discharge zakat. And on the other hand, a person who is owning a business, owner of a business, or a proprietary, for example, a proprietary sole proprietary firm, or an LLP, a partnership, or private limited company, public limited company. So accordingly, what will be the difference? So we can start with the individual. It is the individual form in front of me, right? Okay. So with regards to the individual form, generally, say for example, we have gold biscuit, gold jewelry, 100,000 worth gold biscuits, gold jewelry, 200,000. Here, the selling price is very important. Basically, it is the selling price, or it's also known as the scrap value. Silver in any form, if any person, if you have any silver, cash in hand, petty cash, or uh, cash in bank, bank balances, 150,000. And obviously, fixed deposits, FDs, there is also a person's wealth, zakatable asset. Bonds or debentures, the current value, 100,000. Employees provident pension fund, so an amount accumulated in the accounts of the business or the company payable to the employees, so that will be zakatable by the company because it's still in the ownership of the company. It is a zakatable asset, and at the same time we have amount set aside for any purpose, or hajj, marriage, etc. That is amount saved for probably buying a house. That is also say around 300,000. Foreign currency, US dollars, etc. Any other foreign currency. That's also around 200,000. Investment in business. So yeah, probably informal investment or formal investment. Investment could be in shares, mutual funds, or in any other business with regards to mudaraba or musharaka.
Partnership in business, this is ideally musharaka. Value of stock to sell. So this is we're coming to this is the business part. Okay. Amounts receivable. Amounts receivable, any amounts that we're supposed to receive with regards to trade. You see, when we're speaking on a personal level, personal basis, so the amount receivable, if it is a loan, so lent to someone, personal loan, borrowed to someone, so now you have to receive it. Now that receivable, if it is a loan, then that will be an asset, a zakatable asset. On the other hand, if that receivable is uh, from a personal commodity, or like a salary receivable or wages receivable, then that will not be added into this receivable category. Real estate purchased for sale. So yeah, generally real estate, any house you own, uh, even though it is an income generating asset, uh, say you put it on for rent to let, and you're earning from it, you're benefiting from it. So then to that real estate or that land, until it hasn't been uh, purchased for sale, it will not be zakatable. So say for example, 10,000 year 10 lakh shares along with the accumulated profit, deposits, installment, paid insurance premiums, other liquid assets. So all liquid assets will be zakatable. Yeah, fixed assets are not zakatable, as we said, because real estate only purchased for sale, that is zakatable. So basically, total zakatable assets coming to 50 lakhs. And then we have the deductible liabilities, amounts payable, loans is 500,000, EMIs due, which are payable within the next 12 months, because all payable things in one lunar year. That is what in long-term loans it is supposed to pay. The wife's meher, if not paid, and other immediate liabilities, 100,000. So this liabilities total coming to 10 lakhs, and from the 50 lakhs of assets, accountable assets, liabilities will be deducted, 10 lakh liabilities. The net wealth becomes 40 lakhs, and then 2.5% of that is 100,000, 1 lakh. So 1 lakh will be the zakat that will have to be discharged on this asset. We move on to the second part, that is the business zakat. In business, we can see many options are the same, because cash in hand, bank balance, 30 lakh, 30 lakhs, fixed deposits, that will be around 10 lakhs, bonds and debentures, that's 5 lakhs, amounts set aside for any purpose. So this is specific to business, that is also known as reserves. Reserves is basically undistributed profit. So profit that has been earned by the company, but has not been distributed to the shareholders, but rather it has been set aside for a specific purpose, and that is known as reserves. And so reserves is also zakatable. Foreign currency, 10 lakhs. Investment in other businesses, this is also a repetition of the previous sheet. Stocks, investment in stocks, mutual funds, or partnership in any other business, that will be with regards to in the form of a joint venture or a specific a business deal, whatever that partnership. Value of stock to sell. So basically, this is business inventory. Stock, this also includes raw materials, and at the same time we have when we speak about stock, so just to elaborate on this a bit with regards to stock. So one is we have a stock that
is a normal stock. We also have damaged stock. So there is stock, but it has been damaged, and then obviously accordingly, the value will be deducted and depreciated. One is dead stock. Dead stock, basically, it is no longer saleable in the certain market, but it still has some value. So accordingly, that value will be added. Stock that is in transit. So basically, I have bought a consignment, and the consignment is still on its way. It hasn't reached me, so that is in my ownership. That would be zakatable, but it will be zakatable according to, or according to the location where it is at the moment. So the consignment is supposed to come to India, but at the moment of calculation, zakat calculation, it is sitting in Dubai. So accordingly, there, according to Dubai rates, it will be evaluated and calculated. G. Moving on, amounts receivable. All receivables, because in a business, most of the things that are receivable obviously will be, in other words, outstanding invoices that has been for trade and stock that has been sold, and the amount that is receivable. In other words, trade receivables, cash receivables or trade receivables. One more thing that we have in with regards to assets, especially in the IT sector. So there are tangible assets, which what we spoke about, and there are intangible assets also that should be included. So, for example, if there's a company, IT company, that is dealing in the resale of software or websites or apps, etc. So this also will become a business stock, although intangible, and its value will be evaluated and written down. So real estate purchased for sale, obviously real estate for fixed assets, which if not purchased for sale, then it is not zakatable. Shares in other companies along with accumulated profit, deposits, installment, paid insurance premiums, and other liquid assets. So here the total zakatable assets come to 2 crore. Thereafter, from the liability section, we can see the amounts payable, loans. So loans, borrowings, or trade payables, those the amount that the business has to pay. This is also can be outstanding invoices, but it's outstanding invoices to not the suppliers, but rather to the purchasers, or yeah, to the suppliers, because then you'll have to make the payments, which will be deductible. EMI is due according to the lunar year in the 12 installments. Unpaid salaries of employees. Other immediate liabilities. Other immediate liabilities could include utility bills, taxes payable that have already been the outstanding or current payable. So future taxes cannot be included in that. So basically, the zakat deductible liabilities comes to around 80 lakhs. So 2 crore, that is the zakatable assets, minus the total deductible liabilities, that is 80 lakhs. The net wealth comes to 1.2 crore, and 2.5% of that is 3 lakhs. So 3 lakh will be the zakat in a business. A very important point that we need to consider in the payment of zakat when we're dealing with business is that actually, in actuality, zakat is liable personally. So each and every person, according to his ownership, net ownership and assets, he will have to pay zakat. He will be liable to pay zakat. As far as the company is concerned, in the company, the calculation may be from on behalf of the company to make it easier, because shareholders, they might not have access to the asset lists and the stock lists, etc. So it might be difficult for them.
So the calculation may be by the management, but at the same time, the management will inform after calculation of zakat that this is the amount each and every shareholder is liable to pay. Yes, if the shareholders delegate the company to pay the zakat to uh, like make the company their wakil, or delegate them to pay to a certain cause, so that is a totally different thing. But even in a business, each and every person is liable to pay. Personally, partner, shareholder. In an LLP, it is a partner, and in a private limited company or public limited company, it will be the shareholders. Uh, Zakat, with regards to business, it can also be paid in kind. So business stock can also be used to pay zakat. However, it is important that we are very careful in evaluating our stock, because then we must be very sure that this is the actual value of it, and that and this is the zakat that we are discharging. And it is uh, important to be a bit more cautious, towards the more cautious side, when we are dealing with this. So that's it, inshallah, from my side. And hopefully the calculation was clear. If not, then we can deal with the queries in the next Q&A session, inshallah. Jazakumullah khair. Jazakallah Mufti Sahib for taking us through the individual as well as business zakat calculation. Quite a few people had sent their queries while registering. I think some of them have already been answered during these sessions, and some are left. So I will start with some of the queries which I feel have not been covered. So I'll either address it to Mufti Yahya Sahib or Mufti Taufeeq Sahib. So the first query that we have is Mufti Yahya Sahib, if you can tell us that regarding investment in shares of either listed or unlisted companies, that is the public or private companies, is zakat payable on the cost of acquisition, or is it on the market value, or is it based on the zakatable assets of the business itself? And if it's based on the third, on the zakatable assets of the business, then is there any thumb rule that, for example, if the market value is 100 rupees, can I take maybe 33 rupees or something like that? So can you answer that? With regards to zakat on shares, primarily the intention matters. So a person buys shares with the capital gain in mind. So it is possible a person is doing a very short-term trade, probably a weekly trade, a couple of trade of a couple of days, or a monthly trade, or it's possible a 6 monthly trade. Uh, but as long as a person is intending a capital gain with intending resale, and there is a target that they have in front of them, then that will be regarded as a trade stock, and the entire amount will be zakatable. And on the other hand, if the intention is only acquiring basically dividends, benefiting from the dividend, or just keeping it for a long term, so then that will be only on the zakatable assets. With regards to zakatable assets, you see the different the industries, the ratio is different. There is some research was made earlier. Uh, I'm not sure exactly if it was in India, or I think it wasn't in India that I'm aware of, with regards to South Africa. So, basic service-based industries, they had 25% to market value. Not exactly market value, but 25% to the book value, because one is the actual the value, and then 25% of that were zakatable assets. Some were 33%, as you said, but it is difficult to say, like, the thumb rule. I don't think I don't have any
knowledge in this regard with regards to the Indian companies. Jazakallah. Second question from Mufti Taufeeq Saab. ये पूछ So रहे हैं कि ideally, I believe, this. Hello? जी go ahead Mufti Saab. I'm saying ideally, on a case, we can take it on a case-to-case basis initially, and then thereafter, if it's possible, we can try to find like a thumb rule to be on the safe side. Inshallah, hopefully, we'll try and work on it and try and see if we can come up with something. Inshallah. Jazakallah. The second question is for Mufti Taufeeq Saab. ये पूछ रहे हैं कि मैंने कर्ज दिया किसी को और कई साल हो चुके और वो अभी तक वापस नहीं दिए, क्या मुझे उस पर ज़कात अदा करना है या जब मुझे वापस मिलेगा तब ज़कात दे सकता हूँ? जी हाँ, कर्ज के सिलसिले में ये है कि दो तरह के कर्ज हो सकते हैं। एक वो जिनके जल्द आने की उम्मीद है, उनके तो आदमी ज़कात निकाल लेना चाहिए। लेकिन जिसके जल्द आने की उम्मीद नहीं है या बहुत देर से आने की उम्मीद है, तो उसमें फ़ौरन ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता वो जब आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप उसकी ज़कात निकाल लेंगे। तो उस वक्त 1 साल का ज़कात निकालेंगे या जितने साल नहीं, दिए हुए थे उतने? नहीं, जितने साल जो ज़कात अदा नहीं की गई, उतने पूरे सालों की ज़कात एक साथ निकालनी होगी। दूसरा एक सवाल आप ही ले लें कि 3 लोगों ने एक ज़मीन खरीदी और उस पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहा, और उनकी नीयत ये है कि अभी वो किराए पर रह रहे हैं, ये बनने के बाद उसमें चले जाएंगे, तो क्या इस ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट ये ज़कात अदा करना है? अगर ज़मीन ली है उसमें बिल्डिंग बनाकर रहने की नीयत से, तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है, चाहे वो कितनी भी कीमती ज़मीन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आ चुका है। Mufti Yahya Sahab, is zakat payable on bonus received for the previous year, one day before the start of Ramadan? I am assuming that he is calculating on the 1st of Ramadan. So if he has received bonus for the previous year, one day before that, is there zakat on that? If you have that in your bank account or you have it in cash form, then it will be added in your bank balance or cash in hand. Another question, how do we calculate zakat for provident fund accumulations, though it's not in your hand, but you can always see what is the balance and you have the option to do partial withdrawals from it at any point of time? Do we need to give 2.5% of PF balance as zakat every year? With regards to the provident fund, there are certain rulings in this regard. But with regards to zakatable assets, this amount which is there, the amount that a person has can, in other words, you see, take from it. So the amount that a person is allowed to take from their account, that amount will basically a person will have to pay zakat on that. So we'll have to calculate accordingly, say around 20% or 25%, and that amount he will be able to, he should be liable to pay zakat on that. So the amount that he has access to, he should pay zakat on that amount. Yeah. Okay. मुफ्ती तौफीक साहब, एक सवाल है कि अगर ज़कात पहले छूट गया तो उसका क्या करना है? दूसरा सवाल ये कि अगर मेरे कोई रिश्तेदार या फैमिली मेंबर ने मेरे ज्वेलरी पर लोन लिया हुआ है, तो क्या उस ज्वेलरी पे ज़कात देना है? पहला क्वेश्चन ये था कि अगर पिछले सालों की ज़कात अदा नहीं की है, तो अब भी जो है पिछले सालों का हिसाब कर कर उसकी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। जिस तरह के नमाज क़ज़ा हो जाती है, नमाज छूट जाती है, तो पिछले वक्त की नमाजों की क़ज़ा करना ज़रूरी होता है। ऐसे ही पिछले सालों में अगर ज़कात अदा नहीं की है, तो हिसाब करके उसकी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ और ज़रूरी है।
दूसरा सवाल जो आपने किया था कि अगर किसी ने अपनी ज्वेलरी, अपना जेवरात है, किसी और को दे दिया है और उसने उसको जो भी है इंटरेस्ट पर या कर्ज पर, क्या सवाल था, थोड़ा सा उसको वजाहत कर दें। लोन लोन लिया है उनके हाँ जी, जेवरात रिलेटिव रहन ने रख के लोन उस ले पर लिया है लोन लिया, जी। तो जी जी। तो तो उस पर क्या अब ज़कात जाहिर है कि देना है इसमें मुझे? देखना है कि जी जी, तो क्या इसमें ये देखना है कि इसका मालिक कौन है। ठीक है, लोन तो रिलेटिव ने लिया है लेकिन इसका मालिक तो ये देने वाला ही है। तो इस वजह से ज़कात का जब वो हिसाब करेगा तो उन ज्वेलरीज को अपने एसेट के तौर पर या अपने गोल्ड या सिल्वर के ज्वेलरीज में वो उसको ऐड करेगा और उसकी ज़कात अदा करेगा। Mufti Yahya Sahib, there's a question in the chat box that zakatable assets have to be, should the deductibles also be there for 1 year or only at the time of zakat calculation? Once again, Zakatable assets, he asks, is that they have to be there for 1 year, यानी उस पर साल गुजर जाना चाहिए? no, not necessary. Once a person becomes sahib in nisab, so you have your start date and you've already become an owner of nisab. Thereafter, it is not necessary that on each and every wealth a year passes. Awlan al-Hawl is not necessary on each and every wealth. So thereafter, say for example, on the first of Ramadan, like how there was a question discussed earlier with regards to the bonus. So even 2 days before calculation of zakat, you receive a certain amount. That amount will be calculated as a zakatable asset. And likewise for the liability also, if the liability is there on that particular date, it is considered as a deductible. Yeah, definitely. But liability shouldn't be in future. If the liability is outstanding or current liability, then obviously it is deductible. People can raise their hands. Ibn Saud Sahib has a question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum See, I salam have wa just rahmatullahi wa barakatuh. two questions. One is whether we can give the zakat first priority to our relatives, because some people, as our Maulana said, that zakat has to be collected. It's an institutional way. So even for giving to the relatives also, it has to go to the zakat. Then it has to come back to our relatives, or straight away a portion of the zakat can be given to the relatives. The balance can be given to the institution. Yeah, that's what I think. When probably must misunderstood what Mufti Sahib said. Sahib mentioned that it is ideal to distribute our zakat. So you should keep a portion of your zakat for your relatives, and a portion of your zakat should be there for on a collective basis. Because for collective basis, to eradicate collective problems, to solve collective problems of the society, this becomes a very effective tool. Among the relatives who are all eligible for Yeah, zakat. definitely. No, the eligible relatives, we cannot give zakat to father, no? So you see, with regards to relatives, you cannot give zakat to father, mother, your usul. In other words, father, mother, your son and daughters. That's it. And husband and wife. Uh, wife also, no? Yeah. Oh, so only Remaining for the. relatives can be given to each. Wait, So another question is, see, many people, one of my friend in Salam, so he was giving zakat, but he has formed a trust. He is giving the zakat to the trust, but through that trust, he is giving loan to people. That what he says, if you give free of cost, people don't understand the value of the money. So it has to be given per se asana, and then they collect and they rotate it. Whether it is allowed Islam? You see, basically, if a person, while giving it to the person, say for example, a person is in need, and I'm saying about personally, say for example, you give it to a person who comes to you for asking for zakat, or you feel that a person is in need, and you give it to him with the intention of zakat. You give it to him with the intention of zakat, regardless of whatever you can call it. You can call it a gift, you can call it a loan.
the zakat will be discharged. So it is not an issue. Zakat will be discharged. And say, for example, if he is not able to pay back, so then he will not be liable to pay back. No Yeah, problem. yeah, we And will if write he up. We pays will back, write up. if he pays We back, will write. Okay, okay. No, no, that's what, whether, because it is to make a financial discipline to the people who take the zakat. So if there is some sort of a feeling, then they will give back that money and that can be given to others. no Of course, problem. what he is not doing from his own, he is parking the zakat and then to an institution. There is a trust. So through that trust, he is giving and taking back. And Alhamdulillah, now it has grown to about 12 crore or 15 crore rupees they are giving. And they are very, it seems to be a very successful model in Salem. You see, if with regards to this trust, whatever it's doing, uh, at the moment we cannot comment on it. Because we don't know what principles is it following. If it's following the proper zakat principles, then it will be fine. So for me, or for anyone to comment on the ministrations of the trust and what is it doing, what is working, is it Sharia compliant or not, it wouldn't be advisable at the moment unless and until we go and have a close look at its operations. Okay, okay, okay. Thank you. Thank you very much. Brother Zaid Rizvi, you can unmute yourself. Assalamu alaikum. Jazakallah khair. Mufti, Yahya sir, the couple of questions that I have, one is relating to the zakat on my shares of the listed company. Now, there's one aspect where the companies allow company supposed to pay zakat on its current assets, current liabilities, and basically it's its zakatable assets. On the other hand, I have, and now you did also mention that it's on a person who's owning the company. So if I hold 1% of a company, then I am liable to pay 1% of the zakat, if I understood that rightly. Now, since I have bought the shares of the company at a market value which denotes the valuation of that company, possibly the assets of that company. So, if I pay zakat only on the purchase value or the current market value, will that suffice? Or do I need to pay the investment zakat and then also on the company's zakatable assets again? So, will this not be a double impact of the zakat? And You see, I think you are misunderstanding. When we speak about zakat of a company, okay, and basically each and every person of us, either we will be owners of the company or either will be a shareholder in the company. So if you are a shareholder in a company which is a non-Muslim entity, so obviously the company will not be calculating its zakat. So that is why you will have to calculate your own zakat on your share. However, if you are a shareholder in a Muslim company, then it is possible that the company themselves will calculate their assets, zakatable assets, and accordingly will release the amount of zakat liable on each unit or each share. okay. So accordingly, if you own, say for example, you own 100 shares, you will know how much zakat you are supposed to pay. Okay. Understood. All right. Uh, And the other question that I had was since Mufti Taufeeq Sahab did mention that it's on savings and not on the income, and on Mhm. the other which needs to be there for a period of 1 year or so. Whereas the current assets and current liabilities, the working capital on which it is being proposed to pay the zakat. So these amounts are on a constant change. On a daily basis, these amounts changes. Yeah. So, why is the current working capital is zakatable and not the fixed machinery which is used to generate the income? You see, fixed assets. When we look at the principles wherein the Nabi of Allah sallallahu alaihi wasallam, he made the Sahaba radiallahu anhum liable to pay zakat. So those principles were only those that either it is gold or silver, those assets that are intrinsically that have value, gold or silver.
And at that time, there was no other currency besides gold and silver. Gold and silver were used as currency. This was used intrinsically, those assets that have value, and those assets that can have value, and that is through trade. And so that is why those assets that are used and bought with the intention of trade, that will be zakatable. And Okay. the third type of assets that was zakatable in the time of Nabi sallallahu alaihi wasallam, that those assets that reproduced, and that was the animal, uh, camels, goats, sheep, etc. So these three assets were zakatable in the time of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, and then accordingly, the Fuqaha Karam have taken out rulings according to. Brother Zahid Khan, you can unmute yourself. All right. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thanks a lot. And I apologize if I'm asking a question that has already been repeated. I had to step aside for Aisha for 10 minutes. I had a couple of quick questions. The first one was, what is the most straightforward way to compute zakah on public equity, on public shares? I'm an Amazon employee. Every year we get share grants. So is it just if I have 100 shares and each share value is $50, let's say, is it just 150 into 2.5%? Is that it? Or do I have to take into account the year-on-year fluctuations in the actual per share value? That's one question. If you don't mind answering that one first, that would be good. Jazakumullah khair. So we actually dealt with this already, and this was with regards to the intention. A person who owns a share without the intention of resale. So, for example, you're getting a bonus share, then obviously Yes. your intention is not to resell at the moment. So then Yes. the zakat will be on the zakatable assets of the share. So if the market value is $50, then you will have to find out from the balance sheet how many are the zakatable assets in there. And then according to the zakatable assets, say for example, 50% of $50 is you have zakatable assets in there, and the remaining is fixed assets, etc. So 50% of 50, say for example, $25 will be zakatable. I see. Jazakumullah khair. And another quick question. If I've bought land with the purchase of long-term investment, that is, I don't know, it's open-ended 5 years, 10 years, a plot of land, is that zakatable, and how? No, that's not zakatable. Okay. Jazakumullah khair. I appreciate it. Brother Inzimamul Haq, you can unmute yourself. Assalamu alaikum. So, Mufti Sahab, the question which I have is about the calculation, nisab and the calculation time. So, suppose my assets become above the nisab level this Ramadan first, and the assets remained with me for 1 year. So, I have to pay zakat next Ramadan, right? So, and suppose after that, another for when I go for the calculation 2 years from now. So in between, the assets don't remain with me for 1 year above nisab level. So do I need to calculate it on the second year as well, or don't I need to do that? Yeah, you see, I hope. like for example, on the first Ramadan, you became the owner of nisab. Okay, so your nisab date, zakat date starts first Ramadan. When the year ended, you also were the owner of nisab, and then obviously you will calculate zakat and you will discharge zakat. Thereafter, you're saying on the second year, what happened was, during the year, your wealth decreased to a level below the nisab. Okay. Yes. So that is not an issue if the wealth on the first of Ramadan, once again, it was over the and above the nisab. So when it matters on the date of your nisab amount, on the date of your zakat calculation, if on that date you or your assets are above the nisab level, then you will have to pay zakat, even though during the year your wealth had dipped and decreased below the nisab level. Okay. So once you are above the nisab level in your life ever,
then from the time every year you have to make the calculation at Yeah, the same unless time. and And until the zakat date comes and your wealth at that time, Ramadan time, your wealth is below the zakat, the nisab levels, then you have to not don't have to pay. and if 1 year passes by and at the time I didn't have anything, so again I have to do the same thing, or No, again, the ruling then changes. then you will have to wait for the time or the date when you become the owner of Okay. nisab. So then So if 1 year the date passes by will change. without, okay, 1 year passes by, if 1 year passes by below the nisab level, then when it becomes above the nisab level, then you have to start calculation. Yeah. So, for example, after Ramadan, your wealth was below the nisab level. Thereafter, in Shawwal or Dhul Hijjah, you once again achieved a certain amount of money, and hence your wealth became more than nisab. So you will start your year from Dhul Hijjah, the first of Dhul Hijjah. Okay. Okay. Thank you. Jazakallah. Brother Musawir Ahmed, you can ask your query. Yes, assalamu alaikum. Salam. Basically, I have two questions. First question is about the company dividends. So imagine that we have got dividend from the company or the profit from the company, and some of the profit is still in there in the company, which will be taken at a later point in time. But of course, those what is left over, that does not has also the income tax and other taxes within that particular dividend. So how do we actually evaluate? Do we evaluate the full profit and deduct the possible taxes and then pay the zakat, or whatever is taken out we pay zakat only on that, and later on when we get the other part of the dividend we pay zakat for that? So I'm actually not sure. Are you speaking about dividend that you haven't received yet, or dividend that you've already received from the company? Both parts. The dividend which we have received and dividend which we have continued in the company because of as a capital investment or there in the company, because Yeah. there is certain So rules when after you see, yeah. basically when you, for example, you have dividend. Okay. So when your zakat date comes, on that date, if you have the amount of dividend with you at that time, so say for example you received 50,000 dividend, if on the day of calculation of zakat, if that 50,000 is still intact with you, then that will be zakatable. If it has been already spent before that, the time for zakat came, then it is not zakatable. With regards to the share, or you can say the undistributed profits in a company. So obviously, when you are holding a certain company shares, and you have to calculate and evaluate the zakat on the day of your zakat giving, that day you will make a calculation, and that undistributed profit will also become part of the asset, because that will be a zakatable asset. In other words, it can be in the category of reserves or whatever other category they put it in. But that will be regarded as a zakatable asset, and it will be calculated for zakat. Brother, you have any more questions, brother? Just last question. Yes, Jazakallah for that question. The last question is about this giving zakat to relatives. So can that be, for example, there is an example that some relatives do not have some electricity at all in their house for whatever reasons. They are really poor. So can we spend this money of zakat in having them some sort of solar power system or something like that, and that is allowed, or we have to just asking that question? You see, zakat, it is one of the main injunctions of zakat is tamlik. Tamlik meaning to make a person owner, the poor, the miskin, or the faqir. That these two categories, they have to be made owner of the zakat amount. So you go to a poor area, and in that poor area, you say, for example, you spend 100,000 for electricity, or for solar, whatever, like you're saying, or for you build like a well, a borehole,
that will not be sufficient for discharging of zakat, because you are not making one miskin or a number of miskins owners of it. You getting me? That ownership or tamlik is not found here, which is a prerequisite. Basically, all the Aima, it is unanimous on the fact that tabligh is necessary in zakat. Mufti sir, I think this question was more about giving zakat in kind, like in the form of a solar panel for rooftop solar for a particular household. Would that be allowed? Yeah, that would not be an issue. Basically, as long as tabligh is found, so you can give zakat in kind as a solar panel also, or any asset that can be utilized. You can give clothes as well. You can give utensils, or you can give grains, food grains as well. Does Okay, that answer? Jazakallah. Yeah, okay. Yeah, it answered the question. Jazakallah. Brother Moinuddin, you can ask your query. Assalamu alaikum, Mufti Saab. So I have a company that creates finished products using raw materials, and I have some stock available. Okay, so and this is the first question. So while calculating zakat, the amount will be as per the what amount I have, paid to get these raw materials, or the zakatable asset would be on how much will I, have it while selling it as a finished product. So while I'm calculating that zakatable asset, will it be on the cost of the raw materials that I had, or will it be on the finished product that I'll be selling later in the year? You see, on the day of calculation of zakat, what state is it in? That state, the value of that state will apply. Okay. So the current value, if it is still in an unfinished state, the value will apply accordingly. And if it is a finished product, then its value will apply accordingly. Okay. But if I'm holding, for example, I have received the amount for the finished product, but I'm still having that product in my possession. So still, but it has been sold. It's just that the seller hasn't yet picked up from my warehouse. So that also comes into the zakatable asset, or it's just that he has not taken it. I have the amount for it, but it's still in my possession. So if the entire transaction has been done, you have received payment, then that will be in the liability of, in the ownership of the purchaser. Okay. Brother Riaz. One last question, I'm sorry. Yeah, so also in my business, right? So I have some amount that I have to still pay to my vendors from which I buy the raw materials. And there is still some amount which I have yet to receive from my clients whom I sell the finished product, right? So, but this PO has been generated, the transactions are yet not done. It's like I have everything in written, but that amount I have yet not received and not given as well. So for example, if I have 12 lakh rupees that I have to yet receive from my clients, and say 7 lakh rupees I have to still give to my vendors. So do I still consider these as assets and liabilities in my zakat calculation? Because the only PO has been generated, only a written has been, but these I have not yet received or given this. This might be done in the next or after Ramzan. You see, in this case, what you should do is, if the actual contract has not been taken place, so only the PO is generated, the actual contract has not taken place. So then that asset is still in your ownership. Okay. Yes, the amount that you have been given as advance, so that will be zakatable for you because it has entered into your ownership. Okay. So until but your liabilities, you cannot deduct the liabilities because the contract has not been done yet, and hence no liability has been created. That is a future liability. Correct. Getting me? Okay. So until and unless I have it in my possession, the contract completes, I have the amount in my account, till then I that is not a zakatable asset. True. Thank you so much. Brother Riaz Noshad. Yeah, this is Riaz from Chennai. Okay, I have 3 questions, if I may be allowed to ask it.
question number one is like when we give the zakat, like of course, obviously we need to have the intention of the zakat being paid. So do we need to let the person who is getting the amount like this is zakat amount? No, you don't have to inform them. Okay, thanks. But your intention has to be there. Yeah, so that is okay. So the second question is regarding the land. I think earlier portion it was told like when you have a piece of land being bought in terms of long-term investment purpose, then the value of the market rate for that land is comes under zakat assets. Is that right? What do you mean by long-term investment? Now, like I buy a piece of land, okay. So say within 2 years of time, I buy 2 pieces of land, and one piece of land I'm constructing a house for me to stay. The other I just leave it open. Okay. You see, because you have to differentiate, because there are many people who own a real estate business, and in real estate, everything is not immediate. So there are many things that many lands that are bought and bought with the long-term perspective. But because he is the major or the primary business of that person is real estate, then obviously that is regarded as trade stock, and the entire will be zakatable. No, but as an individual, like I'm not doing any real estate business, just I'm buying that in asset. Oh, as in from an individual perspective, if you don't have an immediate intention for resale, okay, then that will not categorize as zakatable asset. Oh, so when we sell that land, then the amount which we get, that we need to include as part of the zakat calculation. Yeah. Okay, thanks. Okay, that question is like regarding the